हेलो फ्रेंड्स। यस बच्चों, मैंने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों टॉपिक पढ़ा दिए और उनका प्रैक्टिस आप ढंग से कर लीजिए इमेज फॉर्मेशन का। उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जिसे मैंने एडिशनल नॉलेज करके एक नाम दिया है। देखिए, फर्स्ट है एडिशनल नॉलेज और इसमें हम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल मिरर, that is a single mirror. It is a single mirror means just I just painted means ये हमारा mirror है, that is it is a mirror, it is a mirror and which is painted with the color. Okay, and this one is a incident ray strike on the mirror surface and it is reflected back to the same medium and it is a normally it is a x, angle of incident is x and angle of reflection is x. What is the angle of deviation? So that is the angle of deviation. It is a angle of deviation. It is angle of deviation. Okay, how do we determine the angle of deviation? We just extend this incident ray by dotted line and this total angle which is a 180 degree and minus x plus x, that is 180 minus 2x, that is the angle of deviation. Okay, it is a directly formula which we have got it. And next, angle of deviation for reflection from two plane mirror. Here I have considered the two plane mirror, yes, which are inclined. These two plane mirror incline at angle theta, at an angle theta. And here this one is a mirror 1 and mirror 2 and it is the incident ray strike on this one. It is the incident angle x and it is a reflected angle x. After reflection it is strike on this one mirror surface. Okay, these two plane mirror are inclined at an angle theta and this angle equal to 90 minus x and this angle is 90 minus y and that angle is equal to theta by total angle that is equal to 90 degree. This total angle it is a 90 degree, so x is there, so 90 minus x. Similarly this one is a 90 minus y and now we find out this one 90 minus y plus 90 minus x and plus this angle theta that is equal to 180. In a triangle the sum of all angle that is equal to 180, so x plus y is equal to theta. It means x plus y is equal to theta. Clear? Here this one is the angle of deviation by a mirror 1 and that is the angle of deviation by mirror 2. Clear? And it is a total deviation. So delta is equal to delta 1 plus delta 2 and in first case deviation produced by single mirror delta 1 is equal to 180 minus 2x. Same way delta is equal to 180 minus 2x plus 180 minus 2y. So we simplify it. Delta is equal to 360 minus 2 theta. Clear? These two cases are clear or not? Next, one more case. When two plane mirror which are inclined at an angle 90 degree. Here these two plane mirror inclined at an angle 90 degree और यहाँ पर दिया है then the angle of deviation it is a 180 degree. Angle of deviation is 180 degree. By simply we have applied this formula, so it is a 180 degree. Clear? And next, two plane mirror are inclined to each other such that the incident light ray on a first mirror and parallel second mirror then reflected from the second mirror becomes parallel to the first mirror. Means यहाँ पर incident light ray which is that is strike on this one और यहाँ पर ये reflected light ray which is parallel to the first mirror. मीन्स थीटा एंगल से हमारा स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर और ये लाइट रे हमारी पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट रे. तो इन दैट केस दिस एंगल between two mirror which is equal to 60 degree. It is I have written over here means two plane mirror are inclined to each other such that incident light ray on the first mirror and parallel the second mirror ये लाइट रे इसके पैरेलल होगी parallel the second mirror when reflected from the second mirror becomes parallel to the first mirror. Means
यहाँ पर ये लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे विच इज पैरेलल टू द मिरर सेकेंड, and after the reflection this light ray is parallel to the mirror 1, then the angle between these two plane mirror that is equal to 60 degree. Next one more case, rotation of plane mirror. Rotation of plane mirror. XY is a plane mirror and AB is a incident light ray. AB is a incident light ray, N is a normal, and it is reflected back to the same medium, that is a BC. Clear? Now we rotate the mirror through an angle theta, so that is a x dash and y dash, that is a y dash. Okay, next, that normal, the position of normal, it will change, that is n dash. It is also rotated through an angle theta. Clear? And this angle, reflected light ray, it will also, the position of this one, it will also change, that is BD in place of BC, that is BD. Now we have to determine what is the angle between CBD. So for the determination of CBD, the angle CBD is equal to angle ABD minus ABC minus करेंगे, and we will get that angle is equal to 2 theta. Just we simplify this angle I, and that is theta, and this one is equal to, also here we have to calculate this one is equal to, means I plus theta, so that is equal to 2I, 2 ब्रैकेट में I plus theta minus 2I करेंगे, means here I have to write it, means that is angle CBD, angle A 2 और ब्रैकेट लगाएंगे हम, that is I plus theta and bracket close, and minus 2I, and we will get that is equal to 2 theta. So we will get here that is 2 theta, that is I angle I plus theta, and it is also equal to, that is also equal to I plus theta. So 2I plus theta, that is equal to ABD, or minus 2I, that is AB and I, और यहाँ से हम लेंगे NBC, that is also equal to I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, माइनस किया तो ये हमारा आ गया. ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए. नेक्स्ट दूसरा है हमारा पार्ट यहाँ पर, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे. रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, एक सेकेंड, For a fixed plane mirror, if an incident ray be rotated through an angle theta, incident ray को हम theta angle से rotate कर देंगे, then reflected ray turned by an angle theta but in opposite direction, ये यहाँ पे opposite direction में ये rotate कर जाएगी. Clear? Next, some more points are related to a plane mirror. The distance between nth image between two parallel plane mirrors on either side, that is equal to 2NA, where A is the distance between two plane mirror. Means यहाँ पर हमारा जैसे ये हमने ले लिया, प्लेन मिरर ले लिए, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो nth इमेज की बात करेंगे, A is the distance between two plane mirror. If the mirror moves away or towards an object, means ये हमारा मिरर है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो मिरर, if the mirror moves towards or away, मीन्स मिरर को इधर मूव करें या इससे दूर मूव करें, टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस d, देन इमेज मूव्स अवे और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस 2d. ठीक है, डिस्टेंस d डिस्टेंस से मूव किया तो ये 2d डिस्टेंस से मूव कर जाएगा. क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए. कोई डाउट है? बाकी नेक्स्ट रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस. हेलो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू
infinite and p is equal to 0, because there is no ability to converge or converge or diverge the light rays, so their power it is equal to 0, and focal length it is power and focal length which are reciprocal to each other, so focal length it is equal to infinite. Here very interesting question is there. Sunglasses goggles have a curved surfaces, but they do not have any power. Why? Both surfaces of sunglasses are equally curved. R1 is equal to R2. तो हमारा एक ये फॉर्मूला, ये आपके क्लास 10th में नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर इसका जिक्र कर दिया है. दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2. Mu is the refractive index of the medium, and R1 and R2, that is a radius of curvature of the both the surfaces. These are equally curved, so equal and opposite R1 and R2 रखेंगे तो P is equal to 0 आ जाएगा. So power of these goggles that is equal to 0, so which we can use as a sunglasses. Next, concave lens of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65. ठीक है, कॉन्केव लेंस है, हमने 1.65 की मीडियम में रखा है. इट मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज द लाइट रे कन्वर्ज ऑन द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम. देखो, इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है. कॉन्केव लेंस होता है हमारा, दैट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस. अगर हम एयर में बात करेंगे तो इसका मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे कॉन्केव लेंस के ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है. लेकिन यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो उसकी नीचे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग होने की जगह पर कैसी हो जाएगी? कन्वर्जिंग हो जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस. रेस्ट ऑफ द मीनिंग विच वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्मूला, इसका दोबारा से यूज़ करके हम निकाल देते हैं, लेकिन मैंने बड़े सिंपल वे में आपको यहाँ पर ये बता दिया है. यहाँ पर एक और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये these are the two convex lens, their focal length f1 and f2 which are separated by d. What is the combination of their focal length? 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2, where d is the distance between them. अगर यहाँ पर हम पावर की भी बात करें तो पावर के लिए हमारा सिंपल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू p, इट इज इक्वल टू p हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू P1. इसको हम लिख सकते हैं P1, ये हमारा P1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये P2 हो जाएगा, माइनस साइन, एंड दैट इज D एंड P1 P2, P1 एंड P2. ओके. नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट पर डिस्कशन होगा. इस वीडियो में हम यहीं पर क्लोज करेंगे. नेक्स्ट में हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे.